हेलो 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 एवरीवन। सो हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो चलिए भाई, आज के कल हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ से। हम लोग कहाँ पे थे? क्रस्कल्स एंड ये प्रिम्स एल्गोरिदम कर रहे थे। लेट मी चेंज द थंबनेल ऑल्सो। हाँ ठीक है, थंबनेल मैंने चेंज कर दिया। तो हाँ, हम लोग कल थे, हम लोग कर रहे थे ये प्रिम्स एंड क्रस्कल एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम में जॉब सीक्वेंसिंग वाला एंड दैट हफमैन वाला हो गया था हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं ये जो कि प्रिम्स एंड क्रस्कल्स है। सो लेट्स गो टू दिस स्क्रीन एंड एज यू कैन चेक हियर, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ जो कि होगा तुम्हारा 3.5 ये होगा, सॉरी, बैकपैक प्रिम्स एंड को अभी मैं सही से नहीं लिख पाता हूँ। एंड कैसे लिखा जाता था? ऐसे लिखा जाता ना। एंड हाँ ठीक है, क्रस्कल्स। तो हम लोग प्रिम्स एंड क्रस्कल्स की बात करेंगे आज। मतलब सर से सीखेंगे, हमारे सर बात करेंगे, मैं तो क्या ही बात करूँगा, मैं केवल सुनूंगा इनकी बातें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और लेट मी लिटिल चेंज दिस ऑल्सो लिटिल बिट। अब आई थिंक परफेक्ट है। आज मैं पता है ग्लाइडेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। आसूस की तरफ से एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इफ़ यू वांट टू लाइक यूज़ दैट सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ इट। बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा एक ही नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, उन डिवाइसेस को तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक कंट्रोल भी कर सकते हो, यूनिफाई कंट्रोल, यानी सेम कीबोर्ड से तुम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं। The topic is minimum cost spanning tree. So for that, first of all, we'll understand what does it mean by a spanning tree. Here I have an example graph. Graph is represented as G and VE. V is the set of vertices 1, 2, 3, 4, 5, 6, and E is the set of edges. The set of edges are from 1 to 2 and 2 to 3, 3 to 4 and so on. Graphs are represented as set of vertices and edges. Now what is this spanning tree? Spanning tree is a subgraph of a graph. Hence I should take the subset of this. So subset of what? Vertices and edges, both the subset or only one subset? So I should take the subset of edges. Vertices must be as it is. So I should take all vertices, 6. Spanning tree means I should take all vertices. Then how many edges? How many vertices I have? Number of vertices are n, that is 6. So I should take number of vertices minus 1, that is only 5 edges. Spanning tree is a subgraph of a graph having all vertices but only n minus 1 edges. A subgraph of a graph. Edges, I should take only 5. So 1, 2, 3, 4, 5. A subset of edges and all I the did not take this one. So this is spanning vertices. tree. ठीक है। See, a tree will not have a cycle. So there is no cycle here. Yes. There is no cycle here. If this you can say it's a cycle. If you start from one vertex, you can again reach back to that vertex. But here, there is no cycle. Is it possible that I will take this one, but I will not take this? Yes. This is also a spanning tree. I will take this, but I will not take this. Yes, this is also a spanning tree. So which edge to select, that is a choice. That is a choice for a spanning tree. So I can say that S is a subgraph of a graph where S is defined as set of vertices and set of edges, where set of vertices are same as the vertices of a graph. बेसिकली जो स्पैनिंग ट्री होता है वो इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ होता है जहाँ पे से इक्वल टू वी डैश होता है और यहाँ पे वी डैश इक्वल टू जो होता है तुम्हारा वी डैश इक्वल टू होता है एंड फॉर अ गिवन ग्राफ
Normally we can divide in mathematics. We तुम्हारा can divide. इरस होता है वो तुम्हारा होगा. For a given graph, how many different spanning trees can be generated? I want to know that how many different spanning trees are possible. So see, number of edges are how many? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have in a spanning tree I should take only 5. I should take only 5. So 6C5. Out of 6 edges, I have to select 5. How many ways I can do that? So 6, 5 C ways. So 6, 5 C is how much? 6 only. C5. So I can have 6 different spanning trees. Just now you can see it's a simple one that I have skipped this edge. Like this I can leave one edge, right? And you can form a spanning tree, right? I can take all except this, take all except this, take all except this. 6 are possible. Suppose if I have one more edge now. Selecting. Now I have 7 edges and I want to select 5. 6. Now how many spanning trees are possible? Selecting. See, I have this spanning tree also. Or I can have this spanning tree also. नहीं क्या बोल रहे हैं सर? Now 6 are possible. Suppose if I have one more edge now. Now I have 7 edges and I want to select 5. Now how many spanning trees are possible? See, I have this spanning tree also. Or I can have this spanning tree also. Now possibilities are more. Now this is 7C5. 7C5. But this edge will form cycle. So how many cycles it is forming? This is one cycle and this is another cycle. So this edge is forming 2 cycles of number of vertices less than 6. So if it is forming number of vertices less than 6, then you will be. No, I couldn't understand, sir. Have this spanning tree also. का मतलब होता है please once more. No, possibilities are more. Now this is 7C5. 7C5. But this edge will form cycle. So how many cycles it is forming? Okay, this is one. Okay, let me. I couldn't. Okay, got it. मैंने ध्यान नहीं दिया यार. 4 मिनट का हमारा जो ये है थोड़ा दिक्कत हो गया है क्योंकि इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने डेस्कटॉप ऑडियो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं और माइक की ऑडियो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ. वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ये मेरी माइक की ऑडियो ही वापस क्यों जा रही है डेस्कटॉप में, प्रॉपर्टीज़ में. ठीक है, मतलब नहीं समझा मैं. अगर इसको उनको cycle and this is another cycle. So this edge is forming 2 cycles of number of vertices less than. क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. Okay, so let me check it once, then I will move forward. मुझे लग रहा है आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है. आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है. अभी तो हम लोग चल रहे हैं, ये है प्रोसेसिंग वीडियो, बट अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं तो लाइव आना चाहिए. आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है. Now I have 7 edges and I. So 1, 2, 3, 4. A subset of edges. No, कोई भी दिक्कत नहीं है. आवाज़ सही है तो यार स्टार्ट करते हैं फिर से. 6. Sorry. So if it is forming number of vertices less than 6, then you will be 7C5 minus 2. So that's it. So what's the formula to know how many different spanning trees are possible from a given graph? So whatever the number of edges you have, you should take all those and see of how many edges you need. You need 5. So 5 is what? Number of vertices minus 1. So this is number of vertices minus 1 and minus number of cycles. Okay. बट यहाँ पर 2 साइकिल्स बन जाएंगे. ठीक है,
तो साइकिल्स के लिए -2 करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो सर ने बोला है कि हम लोगों का जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज़ का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज़ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू तुम्हारे पास टोटल एजेस कितने हैं, उसमें से तुमको सेलेक्ट कितने करने हैं। तो सेलेक्ट तो हमेशा टोटल वर्टिसेस में से एक घटाओगे और माइनस नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। You have to subtract number of cycles. I have a graph where the edges are having weights. So this is a weighted graph. I want to know what are the possible spanning trees possible. So I'll draw a few spanning trees. Let us draw one spanning tree. This is vertex 1 and 2 and 3 and 4. So 4 vertices are there. Then how many edges I should take? 4 minus 1, only 3. So I'll select this one. 1, 2, 3. So what is the weight of this one? 5, 3 and 6. So what is the cost of this spanning tree? Cost of this spanning tree is 14. I'll take one more spanning tree. 1, 2, 3, 4. And I'll take these edges. Let us see what is the cost of this. 4, 6, 3. Then what is the cost of this one? 13. The cost is 5, 3, 6. I'll take one more spanning tree. 1, 2, 14 cost 3, 4. And I'll take these edges. This one and this one and this one. 4, 2 and 3. So this is cost is how much? 9. और यहाँ पे इसका कॉस्ट होगा from this example, some observation, we can understand something. If you have a weighted graph and you get different spanning trees, the cost of the spanning trees may be varying. You can get a different cost of spanning trees. Now, the problem is, can I find out the minimum cost spanning tree? Can I find out the minimum one which gives me minimum? Yes, you can find out. How? You can try all possible spanning trees. And then from that you can check whichever is minimum, you can pick up that answer. This is one method. Trying all possible spanning trees will be too lengthy. Is there any greedy method? Yes, the greedy methods are available for finding the minimum cost spanning tree. If a weighted graph is given, you can find out the minimum cost spanning tree by following the method without finding out all possible spanning trees. So what are those methods? One method is Prim's algorithm and the second method is Kruskal's algorithm. There are two algorithms for finding minimum cost spanning tree. I have a weighted graph here and I have to find a minimum cost spanning tree by following Prim's algorithm. Let's see how Prim's algorithm works through an example. Now, as per Prim's algorithm, he says that from a graph, first of all, you select a minimum cost edge. So the smallest edge in the entire graph is this one. Then, this is the initial one. Now, for the rest of the procedure, always select a minimum cost edge from the graph, but make sure that it should be connected to already selected vertices. Okay. Now so let me write it down in my own language. So we are currently doing Prim's one, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं Prim's algorithm. Prim's यार गलत राइटिंग गंदी हो गई। PRIMS Prim's algo, ठीक है। Prim's algorithm हम लोग कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम क्या बोलता है कि सबसे पहले सेलेक्ट द मिनिमम, सबसे पहले पहला स्टेप तुम्हारा क्या है? सेलेक्ट द एज विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले तुमको क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट वाला एज एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में तुमको क्या करना है? सेलेक्ट द एज
विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब दोबारा भी तुमको मिनिमम कॉस्ट वाला करना है, बट मेक श्योर इट इज़ connected with the existing vertices, मतलब उन दोनों में से कोई भी एक वर्टेक्स को कनेक्ट होते हुए जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर एग्जांपल जो सर ने बोला है वो एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होंगे, एंड ये भी आपस में कनेक्टेड होगा। और इसका वेट होगा 28, इसका वेट होगा 10, इसका वेट होगा 25, इसका होगा 24, इसका होगा 14, इसका होगा 18, इसका होगा 12, एंड इसका होगा 16, और इसका होगा 22। तो इन दिस केस अगर हमको मिनिमम फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ सेलेक्ट करेंगे, सॉरी एक एज सेलेक्ट करेंगे, जो कि होगा क्या, जो कि होगा तुम्हारा ये वाला एज 6 to 1 वाला, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम है जो कि 10 है। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक ऐसा एज जो इस एज से तो कनेक्टेड हो बट मिनिमम हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 28 वाला ऑप्शन है, एक 25 वाला ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे 25 वाला, ठीक है, 5 आ जाएगा, ये 25 वाला। फिर उसके बाद अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, अब हमारे पास 28 एक ऑप्शन है, 24 एक ऑप्शन है, 22 एक ऑप्शन है। तो हम लोग 22 वाला सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास 12 है इधर, 18 इधर है, इधर 24 है, यहाँ पे 28 है। तो हम लोग कौन सा करेंगे, 12 वाला करेंगे, 12 वाला करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे 16 है, और फिर इधर साइड 18 भी है, 7 से कनेक्ट करने के लिए, 7 से कनेक्ट करने के लिए 24 है, इधर 28 है। तो आई थिंक 16 वाला करना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब बड़े ही हैं, हाँ 18, 20, ठीक है। तो ये 16 वाला हमने किया, ये 3 से कनेक्ट हो गया। अब सॉरी 2 से कनेक्ट हो गया, 3 तो वहाँ पे था, ये 2 से कनेक्ट हो गया। लेकिन अब अगर मैं ये वाला चूज़ कर लूँ तो ये तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास में एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल मुझे बनाना नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, या फिर तो मैं 28 चूज़ करूँ, या ये वाला, ठीक है, या ये दोनों, या हाँ मतलब कितने ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, ऑप्शन यही कुछ बचे हैं ना, 28 बचा है, और 14 बचा है, 18 बचा है, 24 बचा है, बस यही ऑप्शन है मेरे पास। तो इसमें से मिनिमम क्या है, इसमें से मिनिमम 14 है, लेकिन अगर 28 होता मिनिमम, यहाँ पे 28 नहीं होता, तो हम लोग कुछ आई गेस हम लोग वो वाला सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो एक सर्कल मतलब सॉरी साइकिल बनाएगा, और साइकिल मुझे नहीं लगता स्पैनिंग ट्रीज़ में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मिनिमम एजेस होते हैं ना स्पैनिंग ट्री में, मिनिमम एजेस ही होते हैं। मतलब बेसिकली वर्टिसेस -1 होगा ना, तो वर्टिसेस -1 करने के लिए तुमको एक भी साइकिल नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा ले लेंगे, इसीलिए हम लोग ये वाला ले लेंगे, और ये हो जाएगा 14, और ये यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आई थिंक ये है तुम्हारा मिनिमम जो पाथ हो जाएगा बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 22 एंड 12 हो जाएगा तुम्हारा 34 और 16 हो जाएगा तुम्हारा 50 64 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74 25 99 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा मिनिमम मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री है होगा मेरे हिसाब से। Minimum is which one? 3 to 4. Don't take that. It will not be connected to 1 or 6. So take only those which are connected to 1 or 6. Means what he is trying to do is always maintain a tree. Prim thinks that if some farther away edge is selected, then it may not be forming a tree finally. So that is the reason he suggested that always select a minimum edge which should be connected. So let us see what's the next one. So for this connected one are this one and this one. So out of this 25 and 28, 25 is minimum. So select this 25. Then this 28 and 5 connected to 5 are 22 and 24. Give me 1 minute, sorry. Give me 1 minute. Let me turn that
heat thing off. तो मैं वापस आ गया हूँ. एक्चुअली यार बाहर ना कुछ तो चल रहा है, मतलब लाइक कुछ नहीं, बारिश हो रही है आई गेस तेज़ी से, या बाइक जा रही होंगी इसीलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है. तो bear with me for a moment. So out of this 28, 24 and 22. So from 1 and 6 and 5 I'm checking. So already 6 is over. So 1 and 5. So out of those, this is the smallest one. So 4 is selected. Now from 1, 6 and 5, 4, who is smallest? The connected one. So this is 24 and 18 and 12. So 12 is the smaller. So we will take 12. Then out of all these, which connected is the smallest? So here I have 24, 18 and 16. So 16 is the smaller. So take that 16. Then out of all these, who is next connected? So from 2 to 7, there is an edge which is connected. So this is 7. That's it. There are 7 vertices. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 edges are selected, and this is how we got a minimum cost spanning tree. And this is how we got a minimum cost spanning tree. What is the cost of a tree? The cost of a tree is, if I add all these, it is 99. 99. So the approach of Prim is initially select the smallest one, then always select the connected smallest one. Okay. So this is the method of Prim's algorithm. Next, if I have a graph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I have a graph like this, which is not connected, there are total 7 vertices, but there are 2 pieces in a graph. Can Prim find out the minimum cost spanning tree for this one? No algorithm can find out, because we cannot find a tree for this one, spanning tree for this one. In a spanning tree, it must be connected. So for non-connected graph, we cannot find spanning trees at all. But if I start Prims from this one, starting from vertex 1, if it is starting, then it may find the spanning tree for only one component, not the other component. Next method for finding minimum cost spanning tree is Kruskal's method. This also for... Wait a minute, not applicable for disconnected graphs. Disconnected graphs. ठीक है, आइए सर. Next. Follows a greedy approach. Instead of trying out all possible spanning trees, it shows a procedure by following which we can get a minimum cost spanning tree. It says that always select a minimum cost edge. Always select a minimum cost edge. Let us follow this one. Select smallest edge 1 to 6. That's 10. This one is the smallest. फिर से हम लोग करते हैं. तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि तुमको हमेशा क्या करना है, एक स्मॉलर 1 2, लेट मी, ठीक है, 2 हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज़ 3 हो जाएगा, दिस वन इज़ 4 हो जाएगा, दिस वन इज़ 5 हो जाएगा, दिस वन इज़ 6 हो जाएगा, और तुम्हारा 5 और 7 आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, जो 2 से कनेक्टेड होंगे, और ये 4 से भी कनेक्टेड होगा. दिस वन इज़ 18, 14, 28 and 16 and 12 and 10, and what is this? This is 20 something tha. 25 and 24, 25, 24, 25, 24 and 18. This one is 18 and this one is 22. Okay, 5 to 4 is 22. ठीक है. And the next smallest test is 3 to 4. So the second edge I'm selecting is 3 to 4. तो सबसे पहले तुमने एक edge select किया जो कि smallest है. फिर second जो है वो 4 to 3 है. 2 to 3, that is 16. 12 हो जाएगा. And after this, the next minimum edge is 7 to 4. But that is 18. If I select that, it will form a cycle. Yes, Kruskal method says that always select a minimum cost edge. But if it is forming a cycle, don't include it in the solution. Discard that edge. Don't include an edge. Okay. So it means always select such that. तो यहाँ पे क्रिस्कल्स एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, ऑलवेज सेलेक्ट अ मिनिमम कॉस्ट एज, जस्ट वॉच आउट फॉर cycles, and if cycle is
occurring, then select next, then select next minimum edge. ठीक है, ये होगा तुम्हारा Kruskal's algorithm. It is not forming a cycle. So if I include 4 to 7, it will form a cycle. So next one you check. So the next one is 22. So this is from 5 to 4 or 4 to 5. So this is 22. Next minimum is 24. So that is 7 and 5. If I include this also, it will form a cycle. Don't include that one. Then the next minimum one is 25. That is from 5 to 6. So this is 25. And the cost of this one is, if you add all these weights, it's 99. So here also I got the same result, just how I got in Prim's algorithm. So the Prim's algorithm and Kruskal algorithm has given the same result on this particular graph. Now time taken by Kruskal's algorithm, how much time it takes? See, it has to always select a minimum cost edge from the set of edges. So let us say there are E number of edges. So out of these edges, it will find out the minimum one. And how many such edges it will be selecting? It will be selecting V minus 1, that is number of vertices minus 1. So like we know in a spanning tree, if there are 7 vertices, we need 6 edges for forming a spanning tree. So that's 7 minus 1. So as many vertices we have, minus 1 number of edges we have to select. So the total time will be theta of V into E. There V is number of vertices and E is number of edges. So it is N into E. N is the number of vertices and E is the number of edges, which can also be written as N square. If we say both are N. तो ये जो होगा ये फाइंड आउट कर रहा होगा, जो N होगा बेसिकली तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारा N होगा ये फाइंड आउट कर रहा होगा मिनिमम को, ठीक है, और ये जो E हो रहा होगा ये बेसिकली सेलेक्ट कर रहा होगा ईच एज, ठीक है, सेलेक्टिंग एजेस, और हर एक एजेस के लिए ये फाइंड आउट कर रहा होगा मिनिमम को, ठीक है. Is n square. So the time taken by Kruskal's algorithm is n square. But wait. Number of vertices and E is number of edges. So it is N into E. N is the number of vertices and E is the number of edges, which can also be written as n square. If we say both are n, then it is n square. So the time taken by Kruskal's algorithm is n square. But Kruskal algorithm can be improved. When we have to always select a minimum cost edge, then there is one data structure which will always give you minimum value. That is min heap. If min heap is used, then min heap will always give you a minimum value. Whenever you delete a value, you get a minimum value. So if all these edges are kept in a min heap, whenever you delete, you will be getting a next minimum edge. So you don't have to search. So from min heap, whenever you delete, the time taken is log n. So how much time it will take for finding a minimum cost edge? Log n time. So how many times you have to do that? That is n time, number of vertices minus 1 time. So n. So by using min heap, the time. If we use note, क्या नोट करना है सर कि if we use min heap for storing the edges, then it would give a minimum vertex upon deleting in log of n time. That means what? That means जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रस्कल्स जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑफ लॉग एन, एंड कितने तुमको वर्टेक्स सेलेक्ट करने, ई वर्टेक्स सेलेक्ट करने, तो बेसिकली ये हो जाएगा ई ऑफ लॉग एन तुम्हारा थीटा, ठीक है. लेकिन अगर मैं ई को एन के बराबर मानता हूँ तो ये एन लॉग एन भी लिख सकते हो तुम इसको, इन केस अगर तुम्हारे वर्टिसेस तुम्हारे time complexity of Kruskal's algorithm will be n log n. So that's how Kruskal algorithm can be made faster. Now if there is a graph given that is not connected graph, it is having two components, 4 vertices on this side, 5 vertices on that side. Can we find a spanning tree on a non-connected graph? No, spanning tree is not possible. But what happens if I run a Kruskal's algorithm? So Kruskal algorithm will try to find out total number of edges, that is 9 minus 1. So it will try to select 8 edges. And it will not be forming a spanning tree for entire graph, but it may be finding the spanning tree for each component. Let us say the first minimum, the one it will select is this one. Then the next minimum, it is having more than 1 edges. Let us say it selects next minimum, and the next minimum it will select this, next minimum it selects this, and this is the next minimum. So in this way it is selecting the minimum edges from both the components, or it will be selecting from all the components. So it may be finding spanning trees for all the components, but not for the entire graph. So Kruskal algorithm may work for non-connected. ये तो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है. जो तुम्हारा क्या बोलते हैं Prim's algorithm है, this will not work on, not applicable on disconnected graphs. बट अगर हम लोग Kruskal's की बात करें तो ये तुम्हारा may find
minimum cost spanning trees for components, ठीक है। कंपोनेंट्स के लिए मे भी फाइंड कर सकता है, हाँ, तो मतलब मे और मे नॉट वर्क वाला सीन है। पर पूरा मतलब पूरा तुम्हारा क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो स्पैनिंग ट्री मतलब ओवरऑल ग्राफ का नहीं होगा, लेकिन उसके पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का हो सकता है। इट मे गिव स्पैनिंग ट्री फॉर दोस कंपोनेंट्स। Let us take a problem here. A graph is given and the weights of the edges are also given, but here two edges are not having their weights. If I take only these edges which are having a weight, they are forming a spanning tree of a graph. Just hide these two edges, it becomes a spanning tree. Now the question is, what could be the minimum values of these two edges? What could be the minimum possible value? Maximum it can be anything, but at least what could be the value? See, as this is included in a spanning tree, this is included in a spanning tree, this is not included because it is forming a cycle. So it is forming a cycle. If it is included, this will form a cycle. So it may be considered after selecting these two. So the weight of this could be 4. Okay. Right? First this is selected, then this is selected, then this is not selected, means definitely it is 4. If it is less than 4, then that would have been selected first. Right? So it came later. So it is forming a cycle, so it is not taken. Then this 4 is taken, then this 4 is taken, this 5 is taken. So then what could be the minimum weight of this one? So it is not selected. At last it is left over, means minimum weight of this one could be 6. So this is 4 and that is 6. So if any missing edges are there, you can find out this type of problems we find in examination. Okay, so हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे बेसिकली जो मिसिंग एजेस हैं उनका भी हम लोग वेट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो मतलब वही वाला लॉजिक लगा के कि अगर हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे इसका, ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे 4 कर लिया, 5 कर लिया, यहाँ पे तुम्हारा 4 है एंड दिस वन इज़ 5, हाँ ठीक है, वर्टिसेस 5 है, यहाँ पे इसका वेट 3 है, यहाँ पे इसका वेट 2 है, ठीक है। जुकाम हो रखा है भाई, आज भीग गया था मैं जब आ रहा था कंपनी से, तब थोड़ा सा भीग गए थे, बैग वैग सब गंदा हो गया है, लेकिन ठीक है चलो आगे। तो ये है हमारा स्पैनिंग ट्री। अब अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा ये वाला अगर मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो उस केस में ये वाला जो सेलेक्ट करा मैंने, उस केस में इसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों ने इसको सेलेक्ट नहीं किया इस वाले एज को, नहीं तो हम लोग इस वाले एज को सेलेक्ट करते तो इसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा यानी 4 होगी। और ठीक है 4 है, और जो ये लास्ट में बचा है तो इसकी वैल्यू तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला तो सेलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो इसकी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या पता चल सकता है, हम लोगों को जो kind of missing weights हैं वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं। Some missing edges you can find out. So if you know spanning tree, you can answer this type of question. Let us take this example and let us find out spanning tree for this one. Minimum cost spanning tree. So if I follow Kruskal's method, so first I will select the minimum cost edge. This edge I have selected. Then the next minimum is this tree and that tree. So I can select any one. So I will select this one first. So let's find out exercise. This is the exercise. This is A, B and D, C, this selected, E, okay, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Next I'll select this one. So is it forming a cycle inclusion of this one? No. So I'll select that one. Then which are the edges? 4 and 4, these two are there, so I can select any one, so I'll select this one. Whether this will form any cycle? No. So total how many edges I have selected? 1, 2, 3, 4. And total how many vertices are there? 5 vertices are there. So 4 edges are selected, that's how I got a spanning tree. So what's the cost of the spanning tree? 2 plus 3 plus 3 plus 4. And this is 12. Spanning tree is a minimization result. So definitely there will be यहाँ पे तो लेकिन 4 है तो साइकिल बन जाएगा, तो हम लोग नहीं समझा मैं, सर ने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा तो साइकिल नहीं बनना है ना, और मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो भाई मिनिमम अगर मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, पहला दूसरा, इसको तीसरी बार में, इसको चौथी बार में, ठीक है। only one result. So for a problem there can be only one optimal solution. So we should have exactly one spanning tree only. There cannot be more than one spanning tree, right? But in this example you can see, instead of taking this 4, this edge, I can take this 4 also. Now also it's forming a spanning tree. Yes,
So I can select one more. But what is the cost? Cost is 12. So cost is only 1. The optimal cost is 12 only. You will get the optimal cost, minimum optimal cost, optimal minimum cost would be single value. ठीक है, single value, what there might be more than one solution to the problem. बट तुम्हारा काम अगर प्रॉफिट फाइंड करने का है मिनिमम, तो अब मिनिमम प्रॉफिट नहीं, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने का है, तो तुम कुछ भी, कोई दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो. definitely only one answer in the minimization or maximization problem. But for that answer, the set of input may be changing. So either you can include this 4 or this 4. So total how many spanning trees are possible? 2 spanning trees are possible. But what's the minimum cost? That is 12. Topic is Dijkstra algorithm. This algorithm is for single source shortest path problem. So guys, आज के लिए इतना ही. अभी मुझे जाना है जिम. मैं जिम नहीं गया हूँ, और अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हम लोगों का आज हो गया है क्रस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिदम. हम लोगों ने आज ये देखा है. एंड अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे दिक्षित्रा एल्गोरिदम, जो कि ये वाली वीडियो है सर की. और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट अपना ये वाला टॉपिक है उसके साथ में. ओके, सो कनेक्ट स्मार्ट एंड कोड स्मार्टर. बाय बाय.